घटना जे आपल्या आसपासची बातमी असेल आपणा सर्वांसाठीची. आपण पाहत आहात 7 मराठी न्यूज. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत JK सुपर डिजिटल स्टुडिओ. व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफीच्या दुनियेतील एक ठीक करने के लिए हम कुछ कहते. I love you MIT. आजचा दिवस फार महत्वाचा आहे. The Lion of India was born today. आणि 3 गोष्टी फार महत्वाच्या शिकवल्या त्यांनी. स्वातंत्र्य, न्याय आणि स्त्रीचा सम्मान. And all these things hold just as much importance today and every day of our lives. And today as I stand in this mighty university, MIT, really mighty to the T, and I thank you Professor Vishwanath ji, Professor Sunita, Professor Mangesh for inviting me here. I thank all the members on the dais and wonderful dancer and friend Prachi. समीर जी, आप लोगों ने तो इश्क कैसे करना है वो सिखाया हमको, तो हम तो बच्चे हैं आपके सामने. क्या बात कर रहे हैं. But to all the students, you have been hearing so much, and Prachi told me she's been judging some of the programs over here. और आप लोगों ने तो वाकई कमाल कर दिया. आज जो इतने सारे अवार्ड हम लोगों ने बांटे हैं, वाकई लगता है कि बंबई से इतनी दूरी में ये यूनिवर्सिटी थी तो हम क्यों नहीं आ सके. सर, हम ज्वाइन कर सकते हैं अभी, ये एज में भी चलेगा. स्टूडेंट्स, कैन आई बी अ स्टूडेंट अमंगस्ट यू? आई मीन, आई वुड रियली रियली लव टू. Okay, no, I'm not going to take a seat away from you. पर वाकई बहुत अच्छा लगता है कि इतने प्रेरणादायक ना ही तो फैकल्टी है, पर यूनिवर्सिटी का कैंपस और इतनी सारी चीजों की नॉलेज, इतने सारे फैकल्टी मेंबर्स, इतनी सारी साइंसेस, एडवेंचर क्लब, संगीत, डांस, you name it, and this university has got everything. So honestly, I truly believe that all of you all are very, very lucky, and I'm sure you all are very proud to be part of this university. A special mention to Tanvi, who started this program so well, and the way she spoke, I am at a loss of words. Honestly, I think if that is the way the student comes out from this university, I feel very unlucky that I didn't attend something like this, and I wish I could join this university again. Sir, admission form mujhe de dena. But congratulations to all those who have completed their course, all those who are taking part in the Persona Fest. Nothing could be better than bringing out the persona that is there inside of you. The hidden talents no longer have to be hidden. They have to be encased and showed to the world, because that is what Persona Fest is all about. और ये 8वां साल है, right? 8वां साल है. I wish that this goes on for another 8, 16 and years onward, and more students get the opportunity to showcase their talent here on the Persona Fest. और जाते जाते एक छोटा सा टैलेंट जो आप नहीं जानते, और यहाँ पे समीर जी है, आदिनाथ जी है, गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा. दीवाना
सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझना. An ode to Lata ji, who thankfully provided me this wondrous voice and wondrous tune for which I'm even known after 3 decades. So thank you, God. Thank you for all your love and for all your love that's keeping me alive in your hearts. Thank you, and thank you once again for making this possible for me to visit here. And I will hope that I come here again and again. तो आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, ये पहली नजर हुआ हल्का सा सर, आऊंगी मैं तो MIT बार बार. यही सच है शायद मैंने प्यार किया, हाँ हाँ आप सब से मैंने प्यार किया.